गुड मॉर्निंग समस्त को जब वॉइस क्लियर अच्छी तेज कमेंट सेक्शन में यस लिख। तो आज आम स्टार्ट करवा जोटा कि एसएसबी एग्जाम ऑलरेडी आपनकर डेट अनाउंस हो सारी। तो आज आम स्टार्ट करवा जनरल साइंस जोटा कि किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम रे आसला बड़े क्वेश्चन तो डिटेल एक्सप्लेनेशन सह आम डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब वॉइस क्लियर अच्छी तब कमेंट सेक्शन में यस लिख। जब वॉइस क्लियर अच्छी तब कमेंट सेक्शन में यस लिख। वॉइस जब पहुंची पार्टी जब वॉइस क्लियर अच्छी तब कमेंट सेक्शन में यस लिखा सेशन को शेयर कर दियो। प्रणाम मध्य गुड मॉर्निंग वॉइस क्लियर अच्छ तो चलो डेरी नक स्टार्ट करवा आज प्रथम क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेवी वाटर रे को एलिमेंट आपनकर या भीतर प्रेजेंट थाए हेवी वाटर रे केउ एलिमेंट या भीतर प्रेजेंट थाए हेवी ऑक्सीजन हेवी हाइड्रोजन हेवी क्लोरीन हेवी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर कौन होबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो शेयर कर दियो सेशन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन हेवी वाटर रे को एलिमेंट प्रेजेंट थाए कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट बाणा भलिया दिवा दरकार ठीक अछि। तो यार करेक्ट आंसर कौन होबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यार करेक्ट आंसर हम जो देखिबा तो जोटा कि हेवी हाइड्रोजन ही हम करेक्ट आंसर कौन होबा हेवी हाइड्रोजन। मु जतबे आइसोटोप पढ़ाई तुमको क्लास रे सेतबे कही हाइड्रोजन रे तीनटा आइसोटोप थाए गोटे हूँ H11 H12 आउ गोटे हूँ H1 क्लियर। तो आइसोटोप क्या कहबा सेटा भी कही सेम एटॉमिक नंबर थी एटॉमिक नंबर सेम थी बट मास नंबर डिफरेंट हेले तो ताकू आमे कौन कहबा आइसोटोप बोली कहबा। हाइड्रोजन रे तीनोटी आइसोटोप थाए गोटे हूँ प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम या ना कौन थिला क्लास रे कहैतला या ना हूँ प्रोटियम या ना ड्यूटेरियम या ना कौन थिला ट्राइटियम। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आमे देखिबा एटी एक्सप्लेनेशन अछि जानि परथुओ heavy water is water that contains heavy hydrogen or deuterium। तो एठी हमें जानिले कोन हेवी हाइड्रोजन जोटा सेटा को ड्यूटेरियम बोली कहै अर्थात तार जदि आइसोटोप कथा पचारे ड्यूटेरियम कोटा हबो S12 एटा तमरा कोउठी थाए हेवी वाटर एटा होउची तमरा हेवी वाटर बा जहार ना होउची कोन ड्यूटेरियम बोली कहै जहार ना कोन ड्यूटेरियम क्लियर। Deuterium differs from the hydrogen usually found in water। तो ड्यूटेरियम कोड देखा जाए वाटर ही देखा जाए। प्रोटियम इन दैट each of atom of deuterium contains a proton and a neutron। heavy water may be deuterium oxide जोटा कि होची DTO। heavy water कोटा DTO DTO टा कोन ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO टा कोन ड्यूटेरियम ऑक्साइड एवं ये गोटे हाइड्रोजन ला आइसोटोप फॉर्म कहि परिबो जोटा होची H12 जोटा कि ड्यूटेरियम बोली कहै और इट मे बी ड्यूटेरियम प्रोटियम ऑक्साइड बोली भी कहै। तर यार आ गोटे ना जे हम कहबा यार अदर नेम कोन हबो ड्यूटेरियम प्रोटियम ऑक्साइड जार ना होची DH। समझ क्लियर हला। प्रथम क्वेश्चन समस्त क्लियर है कि नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करा जो प्रथम क्वेश्चन समस्त क्लियर है कि नहीं प्रथम क्वेश्चन समस्त क्लियर। तो ये मन रखार कथा हूँ कौन हेवी वाटर जोटा सेटा हूँ ड्यूटेरियम बा ताकू कहा जाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड बा ताकू कौन कहा जाए ड्यूटेरियम प्रोटियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम प्रोटियम ऑक्साइड है सेटा DHU ड्यूटेरियम ऑक्साइड है सेटा DTU एवं जो हेवी वाटर अच्छी H11 गुटे H12 गुटे H13 गुटे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ये मझीटा हूँ कौन ड्यूटेरियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन the dash is the stem like part of the leaf that joins the blade to the stem is known as dash। तो या भितर को पार्ट टा गोटे स्टेम लाइक पार्ट भली काम करे पत्रर स्टेम लाइक पार्ट भली काम करे जोटा कि जॉइन करिछि स्टेम को ब्लेड टू स्टेम को सेटा को कोन कहै भेन बोली कहै जाय पेट्यूल बोली कहै जाय स्टिप्यूल्स बोली कहै जाय मिडरिप बोली कहै जाय। करेक्ट आंसर कोन हबो सेकंड क्वेश्चन ला कमेंट सेक्शन ला कमेंट करो।
The dash is the stem-like part of the leaf that joins the blade to the stem is known as dash. अब आइसोटोप का कुआଯାଏ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर है आइसोटोप बोली कुआଯାଏ तो जत गोटे एलिमेंट को आम प्रेजेंट करती सेतबेले एलिमेंट रे तले थाए एटॉमिक नंबर ऊपर थाए मास नंबर एटा होची मास नंबर जेटा होची एटॉमिक नंबर यार करेक्ट आंसर जो देखिबो करेक्ट आंसर हबो पेट्यूल करेक्ट आंसर कोन हबो पेट्यूल द पेट्यूल इज द stalk like structure ओ टाइप रो स्ट्रक्चर stalk like structure which connect the leaf blade to the stem the petiole has tiny tubes petiole रे कोन थाए छोटा छोटा ट्यूब भली स्ट्रक्चर थाए that connect the veins on the leaf blade to the stem जोटा की भेन सहित कनेक्ट करे लीफ ब्लेड रु भल से शुण लीफ ब्लेड रु स्टेम पर्यंत जोटा काम करे भेन स्ट्रक्चर बा भेन जो थाए लीफ रे तो सेठी कनेक्ट करे फ्यू ऑफ दिस एनेबल वाटर ट्रांसपोर्ट टू द लीफ व्हाइल द अदर कैरी फूड अवे फ्रॉम द लीफ टू द पार्ट ऑफ द प्लांट यार काम कौन ये होची कौन करिवो किसी वाटर को ट्रांसपोर्ट करिवो लीफ को एवं ता सहित फूड कैरी करिवो लीफ रु पार्ट्स ऑफ द प्लांट हला यार करेक्ट आंसर कोन मन रखिबो पेट्यूल सेकंड क्वेश्चन क्लियर हला समस्तकर सेकंड क्वेश्चन क्लियर हला कि नहीं सेकंड क्वेश्चन बुझियाला तो जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर थाए लीफ रु कनेक्ट करे कोउटी की एटा म क्वेश्चन आउट रे को देखो लीफ को जॉइन करे ब्लेड टू द स्टेम लीफ रु स्टेम को जोटा जॉइन करे ता स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ता ना होची कोन पेट्यूल ये काम कोन जो पॉइंट गुडा को सही पॉइंट गुडा लक्ष्य करो ये वाटर ट्रांसपोर्ट करिवो फूड ट्रांसपोर्ट करिवो एथि फूड को कैरी करिवो वाटर को ट्रांसफर करिवो उठी पठेबो लीफ को सब पठेबो लीफ कोन करिवो पार्ट्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट रो अदर पार्ट्स गुडा को ये ट्रांसफर करेबो क्लियर बुझियला चलो क्वेश्चन नंबर 3 Panthera paradox is the scientific name of this एथिरे दी प्रकार क्वेश्चन अछि जनरल साइंस रो क्वेश्चन अछि एंड ता सहित एवरीडे साइंस रो क्वेश्चन अछि दीटा मिसी के रहिछ हला जनरल साइंस एवरीडे साइंस दी प्रकार क्वेश्चन मिसी के रहिछ Panthera paradox is the scientific name of this करेक्ट आंसर कोन हबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी Panthera paradox रो साइंटिफिक नेम कोन Panthera paradox रो Panthera paradox रो साइंटिफिक नेम कोन बा कहार साइंटिफिक नेम तमे कहि परिबो लियोपार्ड रो साइंटिफिक नाम होची कोन Panthera paradox Panthera paradox is the scientific name of leopard leopard रो साइंटिफिक नेम कोन Panthera paradox one of the 5 big cats in the genus Panthera मने रख Panthera paradox भितरु यार जेनस रो ना कोन जेनस रो ना होची Panthera ए Panthera जतबेला क्लासिफिकेशन करा गला बा जेनस को जतबेला निया गला सेथिरे केतरा कैट को रखा हितला 5 बिग कैट को रखा हितला केतरा पांचटा बिग कैट को रखा हितला इट इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फेलिडे यार जदी पचारे यार फैमिली ना कोन फैमिली नाटा भी मन रखिबो फैमिली ना होची कोन फेलिडे विथ ए वाइड रेंज इन सब सहारन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ द एशिया इट बिलोंग्स टू द कड़ाटा फाइलम एटा को कड़ाटा को बिलोंग्स करे फाइलम कड़ाटा को कड़ाटा फाइलम कड़ाटा एवं मामालिया क्लास क्लास मन रखिबो मामालिया क्लास एंड कार्निवोरा ऑर्डर एतिके मन रखिबो पड़ी क्लियर को ऑर्डर कार्निवोरा ऑर्डर ताले एठी इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को कोन रोइला Panthera paradox कहार साइंटिफिक नेम लियोपार्ड रो साइंटिफिक नेम पॉइंट नंबर 1 मन रखिबो यार जेनस रो ना कोन जेनस रो ना होची Panthera पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 होची एठी केतरा कैट नि आइतला पांचटा कैट नि आइतला पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 कोन यार फैमिली रो ना कोन फैमिली होची फेलिडे फैमिली नाम मन रखिबो यार कड़ाटा को कड़ाटा फाइलम कड़ाटा क्लास मामालिया क्लास को ऑर्डर कार्निवोरा ऑर्डर हला एगुडा को एतिकी पॉइंट मने रखिबो ई क्वेश्चन पे क्लियर हैलो कि नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज डैश एंजाइम रे जो
प्रोटीन पार्टा थाए तार ना कौन आइसो एंजाइम होलो एंजाइम आपो एंजाइम ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर कौन हम हाँ आर्ट्स पिलांग पई भी समस्त बेडा एसएसडी एग्जाम जो माने दबो सेबक सेबिका तो से माने पई हेल्पफुल रहबो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज दिस एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट टाकू कोन कहै जाय एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट टाकू कोन कहै जाय करेक्ट आंसर कौन हम एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को कोन कहै जाय एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को कहै जाय आपो एंजाइम मन रखिबो एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को कोन कहै जाय आपो एंजाइम जोटा कहउची तमरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंजाइम कहले कोन बुझ एंजाइम आर डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बायोलॉजिकल जो रिएक्शन हुए तो तार उत्प्रेरक किए एंजाइम केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबल प्रोटीन तो आम जो देखा एंजाइम को भांगिबा बा ब्रेक डाउन करबा एंजाइम रे बहुत सारा प्रोटीन पाइबा ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन बुझिहला गुटिए प्रत्येक एंजाइम गुटिए केमिकल रिएक्शन पाई उत्प्रेरक हेई परिबे प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज आपो एंजाइम एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट कोन कहै जाय आपो एंजाइम बोली कहै जाय इट फॉर्म्स एन एक्टिव एंजाइम सिस्टम बाय कॉम्बिनेशन with a coenzyme and determine the specificity of the system for a substrate एटी कोन कहला जो एक्टिव एंजाइम सिस्टम रे फॉर्मेशन हबो ये गुटे को एंजाइम सहित मिसिकी करिवो एका माने एकिटिया करि परिबो नाही ये गुटे को एंजाइम सहित मिसिकी गुटे कोन दबा एक्टिव एंजाइम फॉर्मेशन करिवो कोन करिवो एक्टिव एंजाइम फॉर्मेशन करिवो एक्टिव एंजाइम फॉर्मेशन हबा पई गुटे को एंजाइम रो आवश्यकता रही क्लियर बुझिहला क्वेश्चन ताले एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को कोन कहै जाय आपो एंजाइम बोली कहै जाय एंजाइम गुटे कोन एंजाइम गुटे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो थरे की केमिकली जो देखिबो एंजाइम रे प्रोटीन थाए एवं प्रत्येक एंजाइम गुटिए केमिकल रिएक्शन पई कैटलिस्ट हेई परिबो बा उत्प्रेरक हेई परिबो हला एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को कहै जाय आपो एंजाइम एक्टिव एंजाइम तयारी हबा को हेले गोटे को एंजाइम सहित मिसिकी करबा को पड़िबो क्लियर हैला कि नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम शोषण करिबारे को विटामिन हेल्प करे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैल्शियम शोषण करिबारे को एंजाइम हेल्प करे विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी करेक्ट आंसर कोन हबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम शोषण करिबारे को एंजाइम हेल्प करे कैल्शियम शोषण करिबारे को एंजाइम हेल्प करे यार करेक्ट आंसर कोन हबो विटामिन डी करेक्ट आंसर कोन हबो विटामिन डी Vitamin D is essential in helping the body absorb and use calcium. Vitamin D रो काम कौन ये गोटे हेल्पिंग बॉडी भली काम करे ये कौन करिवो कैल्शियम को शोषण करबा सहित बॉडी रे यूज करेबो ठीक अछि इनफैक्ट द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब कैल्शियम एट ऑल विदाउट सम विटामिन डी जदि तम बॉडी रे विटामिन डी नाही ताहले ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करि परिबो नाही किए तम बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करि परिबो नाही विटामिन डी हेल्प आवर intensity absorb calcium from the food we eat and help build stronger bones हमें जो खाद्य खाउछंती से खाद्य जो कैल्शियम अछि से कैल्शियम विटामिन डी जदि बॉडी रे रहइबो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करिवो एवं हम बॉडी रे थिबा बोन को स्ट्रॉन्गर बनेबो माने स्ट्रांग करेबो बुझि हला ना नहीं क्लियर है कि नहीं यार करेक्ट आंसर कोन हला विटामिन डी ताले विटामिन डी रो काम कोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करिवो एवं हम बॉडी रे यूज करेबारे साहाय्य करिवो बुझिया तो विदाउट विटामिन डी व्यतीत हम बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करि परिबो नाही क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड
ब्लड रे को एलिमेंट देखा जाए नहीं, ब्लड रे क्यों एलिमेंट देखा जाए नहीं, कपर, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर कौन हम? ब्लड रे क्यों एलिमेंट देखा जाए नहीं, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज दिस। ब्लड रे क्यों एलिमेंट देखा जाए नहीं, जो देखिबा करेक्ट आंसर क्रोमियम, जो माने क्रोमियम देइछा पूरा पूरी करेक्ट। इन द ब्लड द की मिनरल्स, ब्लड रे कौन कौन थाए, आयरन थाए, कपर थाए, जिंक थाए, सोडियम थाए, पोटासियम थाए, कैल्शियम थाए, मैग्नीशियम थाए, एगुड़ा थाए। ताले मने रख, ब्लड रे केउ गुड़ाक थाए, आयरन, कपर, जिंक, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। Minerals constitute important part of blood plasma that constitute almost 55% of the blood। ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ବ୍ଲଡ ରେ ସେଇଟା ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାଜମାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ବ୍ଲଡ ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ? 55% ଥାଏ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 55%। In the blood, iron is found in larger amount than any other mineral। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡା ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡିକ, ଏଇଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି ଏଗୁଡାକ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡାକ ବ୍ଲଡ ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥାନ୍ତି? 55% ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଇରନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଥାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ? ଆଇରନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଏବଂ ବ୍ଲଡ ରେ କେଉଁ କେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆଇରନ୍, କପର, ଜିଙ୍କ୍, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୋଉଟା ଥାଏ? ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ବ୍ଲଡ ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥାଏ? 55%। କ୍ଲିୟର? ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା या भितर ब्लड रे कोउटा देखा जाए नहीं, ब्लड रे कपर देखा जाए, आयरन देखा जाए, मैग्नीशियम देखा जाए, बट क्रोमियम देखा जाए नहीं। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जीवो। बुझियला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इज ए डैश, ईस्ट गोटे कौन? बैक्टीरिया, फंगी, आल्जी, ब्रायोफाइटा। यार करेक्ट आंसर कौन हम? ईस्ट गोटे कौन? बैक्टीरिया, फंगी, आल्जी, ब्रायोफाइटा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी। ईस्ट गोटे कौन? बैक्टीरिया, फंगी, आल्जी, ब्रायोफाइटा। यार करेक्ट आंसर जो देखिबो ईस्ट गोटे फंगी, फंगी जो माने देइछ पूरा पूरी करेक्ट। एठी देखो पूरा ईस्ट ऊपर लिखा है, ईस्ट आर यूकैरियोटिक। ईस्ट गोटे कौन? यूकैरियोटिक। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज मेंबर ऑफ द फंगस किंगडम। जेतिकी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखुछ सब गुडा को किंगडम रा मेंबर अटन? फंगस किंगडम रा मेंबर अटन। को किंगडम रा? फंगस। They are estimated to constitute 1% of all described fungal species। ହେଲା ଯେତିକି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏସ୍ଟିମେଟ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ଫଙ୍ଗାଲ ସ୍ପେସିସ୍ ରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 1%। Each such as Candida albicans are opportunic pathogens and can cause infections in humans। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ବା ଯେତିକି ଫଙ୍ଗସ ତ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ବଡିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କମର୍ସିଆଲି ଦେ ଆର୍ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଆଲକୋହଲ। ଯଦି ଆମେ କମର୍ସିଆଲି ଦେଖିବା ଏଗୁଡାକୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ବେକେରୀ, ବେକେରୀ ସପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରିୱେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାଇଲନି? क्लियर है कि नहीं? ताहले आम एठी देखिले ईस्ट गुड़ाक कौ स्पेसीस रे आसीबे? फंगी स्पेसीस रे आसीबे। तो ईस्ट गुड़ाक तुम यूकैरियोटिक बोली कहि परिबो।
सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेतिकी तो सेगुड़ा सब फंगस किंगडम रे रहिबे पाखापाखी फंगाल स्पेसीस रे गुटे परसेंट रहिबे एवं ईस्ट रो काम कौन ईस्ट रो काम बा फंगस रो काम होची ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन करेबो एवं कमर्शियली एको व्यवहार करा जाए अल्कोहल प्रोडक्शन ले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ले बेकरी शॉप रे ब्रीवरी इंडस्ट्री रे क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेड रॉट इज अ डिजीज caused to which of the following plant एठी प्लांट रो ना लिखा है रेड रॉट गुटे डिजीज एटा को प्लांट द्वारा होता है सुगर केन व्हीट पेडी मस्टर्ड करेक्ट आंसर कौन हम रेड रॉट इज अ डिजीज caused to which of the following plant sugar cane wheat paddy mustard क्लास भल लागुची ना नहीं यार करेक्ट आंसर सुगर केन जो माने सुगर केन देजो पूरा पूरी करेक्ट रेड रॉट is one of the oldest known disease of sugarcane that is caused by the fungus Colletridium falcatum हला तो रेड रॉट होची काहार गोटे ओल्डेस्ट डिजीज सुगर केन गोटे ओल्डेस्ट डिजीज जोटा कि गोटे फंगस द्वारा होता है एवं से फंगस रो ना होची कोन Colletridium falcatum बा ताको ग्लूमेरुला टोकोमेनेसिस बोली कहा जाय It is characterized by interrupted red and white patches within the can, along with a sour alcoholic odor when the can is split open. ଯେତେବେଳେ can ଟା ଓପନ ହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତ ସେଇ ଡିଜିଜ ଟା କଣ କୁହାଯାଏ ରେଡ୍ ରଟ୍ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏଠି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ରେଡ୍ ରଟ୍ ଡିଜିଜ ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ସୁଗାର କେନ୍ କୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ୟା ନାଁ ଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଗୋଟେ ଫंगस डिजीज बोली ओ डिजीज फंगस डिजीज या ना किसी मन रखिବା आवश्यकता नहीं बुझियला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड रे को हार्मोन क्षरण हुए व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड रे केउ प्रकार हार्मोन क्षरण हुए थाइरोक्सिन थाइमोसिन साइटोकाइनिन ऑक्सिन यार करेक्ट आंसर दे देखिबो थाइमोसिन ऑप्शन नंबर बी जो माने देछ पूरा पूरी करेक्ट थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ द थाइमस थ्रू को हार्मोन क्षरण हुए थाइमोसिन इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल हला तो एथिरे कौन स्टिमुलेट हुए डिजीज फाइटिंग नाम रे गोटे टी सेल स्टिमुलेट हुए थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड इयर्स white blood cell called lymphocytes passes through the thymus where they are transformed into T cell एटा मने रख जतबेले व्हाइट ब्लड सेल जोटा कि WBC ताको कोन कुआ जाय लिम्फोसाइट्स बोली कुआ जाय हला लिम्फोसाइट्स जतबेले थाइमस देकी पास करिवो सेतबेले टी सेल ट्रांसफॉर्म हबो वंस टी सेल हैव फुल्ली मैच्योर्ड इन द थाइमस भितरे जेतबेले टी सेल टा फुल्ली मैच्योर हे जिवो दे माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स थ्रू आउट द बॉडी where they aid the immune system fighting the disease एटा गोटे कहि परिबो रोग प्रतिरोधक शक्ति बा इम्यूनिटी सिस्टम ए हार्मोन तार काम होची या तो थाइमोसिन हार्मोन रो काम होची कोन रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइबो अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को डिजीज एग्नेस्ट रे फाइट करिवो बुझियला एवं डब्ल्यूबीसी रो ना होची कोन लिम्फोसाइट्स एवं एठी जो डिजीज फाइटिंग जो सेल टा तयारी हबो जार ना होची को सेल टी सेल बोली कहा जाए को सेल बोली कहा जाए टी सेल बोली कहा जाए जस्ट टिके पॉइंट मन रखिबो सब गुडा मन रखिबा दरकार नाही क्लियर आ मन रखिबो थाइमस रु थाइमोसिन हार्मोन क्षरण हो क्लियर हला कि नै
ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। meningitis is a disease which affects the dash। এটা important question। meningitis ଗୋଟେ disease जोटा कि बॉडी रा कोउ पार्ट को अफेक्ट करे, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन। करेक्ट आंसर कौन हो? meningitis is a disease which affects the dash। meningitis कहा को अफेक्ट करे बॉडी रो? किडनी को, लिवर को, हार्ट को, ब्रेन को। ब्रेन को अफेक्ट करे। मन रख, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेनिनगिटिस बॉडी रो कोउ पार्ट को अफेक्ट करे? ब्रेन को। देख, meningitis is an inflammation of the protective membranes covering the brain and spinal cord, known collectively as the meninges। मन रख, meningitis गोटे कौन? गोटे छोट इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भली काम करे, जोटा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग करी रखे हला। ताकू जेटा हमें कलेक्टिवली कहबा मेनिनगिस बोली कहते। The inflammation may be caused by infection। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ meningitis ଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହିତ, ସେଇଟା ସେଇ ଡିଜିଜ ଟା କଣ କୁହାଯାଏ? meningitis disease ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଲି ମେ ବି ଅପସନ ଲେ ବ୍ରେନ ନ ଥାଇକି ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରହିଲା, यार करेक्ट आंसर स्पाइनल कॉर्ड भी हेई पारि। बॉडी रो दीटा पार्ट, गोटे होची ब्रेन और गोटे होची स्पाइनल कॉर्ड हला। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रो गोटे प्रोटेक्टिव मेंबर जार ना होची मेनिनगिटिस, बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन हेले जो रोगटी हुए जार ना होची मेनिनगिटिस डिजीज। क्लियर? ये बॉडी रो दीटा पार्ट को इफेक्ट करि परिबो, गोटे स्पाइनल कॉर्ड और गोटे होची ब्रेन। taxonomy is a science that deals with the death। এই क्वेश्चन ना करि परिबो। taxonomy is a science that deals with death। anatomy, morphology, economic uses, classification। करा समझ। करेक्ट आंसर कौन हम? taxonomy is a science that deals with death। यार करेक्ट आंसर जो देखिबो क्लासिफिकेशन। taxonomy टा काहा को सहित डील करे? क्लासिफिकेशन सहित। बुझियला? वेरी गुड। taxonomy is the academic discipline of the defining groups of biological organisms on the basis of their characteristics and giving name to those groups। taxonomy ଯେତିକି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେମିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ को बेस କରିକି ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ, ଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟାକ୍ସନ, is a given rank and groups of a given rank can be aggregated to form a super group of higher rank and those create a hierarchical classification। Carolus Linnaeus is considered as the father of taxonomy। এটা very very important question, direct question प्राय एग्जाम रे एटा देखियो मिले। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी काहा को कहा जाए? कैरोलस लिनियस। एवं एटा टैक्सोनॉमी ता कहा से जो डील करे? क्लासिफिकेशन को डील करे। तो छोट छोट ग्रुप करी की
ମାନେ ହାୟର ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏ। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାର ହେରିଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ, ଏଗ୍ରିଗେଟ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ କୋଉଟା ଟାକ୍ସୋନମି ର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଫାଦର ଅଫ ଟାକ୍ସୋନମି ହଉଛି କିଏ କ୍ୟାରୋଲାସ୍ ଲିନିୟସ୍। କ୍ଲିयर। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन डेथ। न्यूक्लियस ର ବାହାରେ ଡିଏନଏ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? न्यूक्लियस ର ବାହାରେ डीएनए କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଗଲ୍ଗି ବଡିज, ରାଇବୋଜୋମ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर कौन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन डेथ। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर कौन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर कौन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए। इन यूकैरियोटिक with nucleus cells, the vast majority of DNA is found in the nucleus as a discrete bodies called chromosomes। ହେଲା एटा देखो भलो से यूकैरियोटिक रे न्यूक्लियस सहित जो डीएनए रहे तो सेटा को कौन कहा जाए? जो न्यूक्लियस रे डिस्क्रीट बॉडीज रुए ताको क्रोमोसोम्स बोली कहा जाए। डीएनए रो क्रोमोसोम आ समझ जानछन। द expression of these being small amount of DNA found in organelles outside the nucleus। କିଛି ମାନେ exceptional case रे स्पेशल केस रे जोटा कोई परियो माने व्यक्तिगत केस रे डीएनए अल्प अमाउंट रे देखा जाए कोउ जगह रे माने न्यूक्लियस बाहर देखा जाए को जगह रे। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। खाली माइटोकॉन्ड्रिया नुहे, माइटोकॉन्ड्रिया सहित जोटा होची क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सहित क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये होची माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक अछि। In human cells, more than 99% of the total DNA is a nuclear genomic DNA and the remainder mitochondria। देखो तो टोटाल जो आम देखा ह्यूमन सेल रे 99% टोटाल डीएनए रो 99% रु अधिक जोटा कि होची न्यूक्लियर जेनोमिक डीएनए बाकी होची माइटोकॉन्ड्रियल। अर्थात न्यूक्लियर एटी जो क्वेश्चन ता पचारि थिला आउटसाइड न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस सहित देखा जानती 99% रु अधिक डीएनए बट पाखापाखि 1% डीएनए जोटा कि न्यूक्लियस बाहर देखा जाए को जगह गोटे हूँ माइटोकॉन्ड्रिया गोटे हूँ क्लोरोप्लास्ट। बुझीगला एति खाली मन रखियो बेसी भितर को जीव ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। या ଭିतर को मैमल तुमर अंडा देथाय कहलो? बैट, व्हेल, वेसल, प्लैटिपस। करेक्ट आंसर कौन हो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। Which of the following mammals lay eggs? Bat, whale, whistle, platypus। यार करेक्ट आंसर जो देखिबा प्लाटीपस जो माने देछ पूरा पूरी करेक्ट। वेरी गुड। प्लाटीपस जो माने देछ पूरा पूरी करेक्ट। द प्लाटीपस नो also known as the dog-billed platypus is a semi-aquatic egg-laying mammal endemic to eastern Australia, including Tasmania. Together with the 4 species of Echidna, it is one of the 5 extant species of monotremes, the only mammals that lay eggs instead of giving birth। ହେଲା एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो। प्लाटीपस गोटे मामाल हेकी भी अंडा देई थाए इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ। हैला जन्म करिबा परिवर्ते से कोन करथाय अंडा देई थाए। तो गुटिया मामाल्स जार ना होची प्लाटीपस। आउ किसी मन रखिबा दरकार नै से को प्रकार प्लाटीपस कोठी देखा जाए एवं ता आउ किए किए को स्पेसीज सहित मिसे सेगुडा किसी जानिबा दरकार नै। जेहेतु तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम रे देखियो मिलिबो तो खाली मन रखिबो प्लाटीपस। क्लियर। नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन ए मिनिट। गुटे मिनिट रे हम हार्ट बीट केते थर हुए? गुटे मिनिट रे हम हार्ट बीट केते थर हुए? करेक्ट आंसर कोन हो?
गोटे मिनिट रे हम हार्ट बीट केते थर हुए वेरी गुड 72 एटा समस्त जानि हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट measured by the number of contraction of the heart per minute हला केते थर कंट्राक्शन होउची पर मिनिट रे तो सेटा कोन कहै जाय हार्ट रेट कहै जाय जोटा की स्पीड ऑफ द हार्ट बीट ताहा द्वारा मेजर करा जाय नंबर ऑफ कंट्राक्शन दीटा फेज हुए गोटे कंट्राक्शन आउट होउची कोन रिलैक्सेशन हला एटा होउची बीपीएम बीपीएम होउची कोन heartbeat per minute 72. Conventionally, a normal adult has a heartbeat rate of 72 per minute. Gote minute re kete haba 72. However, the heart rate can vary according to the body's physical need, including the need of absorb oxygen and excrete carbon dioxide. हमें जानी चंती जते बड़े रेस्पिरेशन रे कौन हुए ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब करंती रिलीज करंती कौन कार्बन डाइऑक्साइड बुझियला दीटा फेज जोडे कंट्राक्शन आउट होची रिलैक्सेशन बुझियला नंबर ऑफ कंट्राक्शन जते थरा हबो नंबर ऑफ रिलैक्सेशन सेति थरा हबो जोटा कि पर मिनिट रे केता हबो 72 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेल्स इन पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन पैनक्रियास रो केउ सेल रे इंसुलिन प्रोड्यूस हुए एस्ट्रोजन कार्पस एपिडेमिस thymus islets of Lagrange correct answer कौन हो कमेंट सेक्शन ला कमेंट करा जल्दी which cell in pancreas produce insulin systolic what was diastolic era correct answer जे देखिबा ऑप्शन नंबर डी islets of Lagrange the islets of Lagrange are the region of the pancreas that contains cell that produce hormone pancreas रे एई पार्ट रे हमर कोन थाए सेल थाए एवं जोथरे कोन हुए हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए there are 5 type of cell in the islets of Lagrange जोटा केतरा पार्ट थाए पांचटा टाइप रो सेल थाए बीटा सेल जोटा कि सीक्रेट कोन करे इंसुलिन अल्फा सेल सीक्रेट कोन करे ग्लूकागन पीपी सेल सीक्रेट कोन करे पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टिडाइड डेल्टा सेल जोटा कि सीक्रेट करे सोमास्टालिन एंड एपिल्सन जोटा कोन सीक्रेट करे गैरेलिन एटा मने रखियो कोन देखो इट आउ थरे कहि दोउची एटा मने रखिबो इंपोर्टेंट हला आइलेट्स ऑफ लैग्रांज रे जो पैनक्रियाज रे ए पार्ट रे कोन थाए को पॉइंट मने छु सेल थाए एवं कोन प्रोड्यूस हुए हार्मोन प्रोड्यूस हुए कोन प्रोड्यूस एठी हार्मोन प्रोड्यूस हुए केतरा टाइप रो सेल थाए पांचटा टाइप रो सेल थाए केतरा टाइप रो पांचटा टाइप रो हला पांचटा सेल कोन कोन गोटे बीटा सेल गोटे अल्फा सेल गोटे पीपी सेल आउट होची डेल्टा सेल आउट होची कोन एपिसिलम सेल हला एठी को सेल रे कोन कोन क्षरण हुए बा केउ को हार्मोन सीक्रेट हुए ठीक सेटा को लक्ष्य करी हला बीटा सेल रु तमरा इंसुलिन अल्फा सेल रु तमरा ग्लूकागन पीपी सेल रु तमरा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड डेल्टा सेल रु तमरा सोमास्टोलिन एवं एपी सेल रु तमरा कोन ग्रेहरिलिन हला एडा डे मन रखियो क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पैनक्रियाटिक जोस required which medium for their action pancreatic juice जो तार को मीडियम रे थाए एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर कोन होबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी pancreatic juice require which medium for their action acidic basic neutral all of the above यार करेक्ट आंसर आवा बेसिक मीडियम को मीडियम बेसिक मीडियम पैनक्रियाटिक जोस इज ए लिक्विड एटा कोन लिक्विड
secreted by the pancreas that consists of water. एथिरे कौन कौन थाए? वाटर थाए, सोडियम सल्ट थाए, एंजाइम थाए. एंजाइम को प्रकार गोटे होची अम्लस्पिन, गोटे होची ट्राइस्पिन एंड गोटे होची स्टेप्सिन हला. सोडियम कार्बोनेट क्रिएट्स एन अल्कालिन मीडियम. एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. एटा जो बेसिक मीडियम जोटा अल्कालिन मीडियम सेटा. ये जो अल्कालिन मीडियम किए क्रिएट करे? सोडियम कार्बोनेट फॉर इट्स एक्शन. Bicarbonate is useful in neutralizing the acidic gastric acid, allowing for effective enzymic changes. एवं एकु जो न्यूट्रलाइज रे किए कन्वर्ट करे? बाइकार्बोनेट क्रिएट करे किए बेसिक मीडियम को? सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइजिंग करे एसिडिक गैस्ट्रिक एसिड को किए? बाइकार्बोनेट. बुझिला ना नहीं? ए पॉइंट ता मने रखिबो. को पॉइंट? गोटे सोडियम कार्बोनेट मने रखिबो, गोटे बाइकार्बोनेट मने रखिबो, आउ कोन मने रखिबो? एथिरे कौन कौन कंसिस्ट थाए हला? वाटर, सोडियम सल्ट, एंजाइम. को प्रकार एंजाइम? गोटे होची अम्लस्पिन, गोटे ट्रायोस्पिन, गोटे होची स्टेप्सिन हला. एति मन रखिबो. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. measles is caused by death. भाइरस, फंगस, बैक्टीरिया, एमोबा. यार करेक्ट आंसर कोन हबो? measles is caused by death. भाइरस, फंगस, बैक्टीरिया, एमोबा. एटा तो इजी क्वेश्चन टा करि परिबो. भाइरस, फंगस, बैक्टीरिया, एमोबा. यार करेक्ट आंसर कोन हबो? भाइरस हला. एटा गोटे भाइरस डिजीज. measles is an infectious disease. एटा गोटे infectious disease caused by the. एटा को भाइरस माने रखिबो? रुबियोला भाइरस. को भाइरस? रुबियोला भाइरस. measles. It is transmitted via droplets from the nose. यार बॉडी रो को पार्ट रे एटा ट्रांसमिटेड होइता है? नोज. नोज हे परिबो, माउथ हे परिबो, थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन हे परिबो. इट रिमेन्स एन इंपोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ among young children globally despite the availability of a safe and effective vaccine. तो ये खाली मन रखिबो measles टा तमरा गोटे इन्फेक्टियस डिजीज एवं गोटे भाइरस डिजीज बोली कहि परिबो. जो भाइरस द्वारा हेता है, जो भाइरस रो नाम होची रुबियोला भाइरस हला. तो यार ट्रांसमिटेड भाई किए नोज, माउथ, थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. एथि एई बाकी दीटा लाइन लास्ट को मन रखिबा किछि आवश्यकता नाही. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? एटा तो इजी क्वेश्चन करि परिबो. लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी रो लॉन्गेस्ट बोन कोठी? शोल्डर बोन, फेमर बोन, चेस्ट बोन, फेरियम बोन, फोर आर्म बोन. करेक्ट आंसर कोन कहलो? Which of the following is the longest bone in human body? Correct answer femur bone है परिबो. femur जोटा के होचे thigh bone बोली कहा जाए. thigh bone जोटा femur सेटा is the longest bone in the human body. Its average length is 90.9 inch. एटा मन रखवा के दरकार नहीं. The femur is the only bone in the thigh. Tibia जोटा कि shin bone बोली कहा जाए and fibula जोटा lower leg come next in sequence with the length of 16.9 15.9. एगुडा मन रखवा के दरकार नहीं. एक नंबर तुम रखी परिबो फीमर बोन को हला. दुई नंबर तुम रखी परिबो को बोन को? टिबिया बोन को. तीन नंबर तुम रखी परिबो को बोन? फिबोला हला. एटा ह्यूमन बॉडी रो लॉन्गेस्ट अनुसार रखी परिबो. एटी क्वेश्चन लिखा है जे देखा लॉन्गेस्ट अनुसार लार्जेस्ट नुहे एटा लॉन्गेस्ट अनुसार हला. एक नंबर है फीमर, दुई नंबर है टिबिया, तीन नंबर है फिबोला. क्लियर? एगुडा का यार लेंथ केते मन रखिबा किछि आवश्यकता नाही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an endocrine gland? या भितर एंडोक्राइन ग्लैंड कोटा नुहे? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, स्प्लीन. Which of the following is not an endocrine gland?
कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी। यार करेक्ट आंसर was spleen. Spleen टा गोटे endocrine gland. The spleen is not an endocrine gland. This is because the spleen is not capable of aiding in regulation of the hormone levels in the human body. ହେଲା तो एथिरे कौनसी हार्मोन रेगुलेशन हुए नाही कोउथरे स्प्लीन रे बाकी जति देखिला सेथिरे हार्मोन रेगुलेशन अछि तो सेट पई सेगुडा के एंडोक्राइन ग्लैंड तो स्प्लीन कौनसी एंडोक्राइन ग्लैंड नु है क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन one of the following is dash that excrete uric acid as its excretory product एमान भितर किए यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करे जोटा कि तार गोटे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हिसाब रे काउंट करा जाय एमोबा स्पेरो तिलापिया कामेल करेक्ट आंसर कोन हम one of the following is dash that excretes uric acid as its excretory product यार करेक्ट आंसर स्पेरो बार्ड एंड स्नेक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड एटा मन रख बार्ड और स्नेक मानकर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जोटा थाए सेटा ना कोन यूरिक एसिड नाइट्रोजेनियस वेस्ट इज एक्सक्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ एमोनिया नाइट्रोजेनियस वेस्ट जो गुडा एक्सक्रिएट हुए सेटा को फॉर्म रे से एमोनिया फॉर्म रे इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल यूरिक एसिड इज द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करि साला परे जो लास्ट को वेस्ट प्रोडक्ट रहे ओ मानकर बर्ड और रेप्टाइल मानकर सेटा होची यूरिक एसिड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड एक्सक्रिएटेड बाय किडनी ट्यूबल्स impaired elimination is an indication of renal disease एगुडा को किछि जानियो दरकार नै खाली एटा मन रख बर्ड और स्नेक रा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होची यूरिक एसिड नाइट्रोजेनियस वेस्ट को फॉर्म रास्ता है एमोनिया फॉर्म रास्ता है कार इन बर्ड और रेप्टाइल जो देखिबो यूरिक एसिड होची तमरा मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आ बाकी किछि जानिबा दरकार नै क्लियर बुझाला चला नेक्स्ट क्वेश्चन करो in which organ of the body does the detoxification of the most poisonous substance takes place बॉडी रो केउ ऑर्गन रे जोटा कि डिटॉक्सिफिकेशन हेइ थाए मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस नहीं थाए लिवर किडनी लंग्स स्टमक एटा दे इजी क्वेश्चन ना करि परियो करेक्ट आंसर कोन हो in which organ of the body does the detoxification of the most poisonous substances takes place करेक्ट आंसर लिवर ही हबो हला डिटॉक्सिफिकेशन गोटे फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करबा प्रोसेस को कोन कह जाय डिटॉक्सिफिकेशन बोली कह जाय फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेनली कैरिड आउट बाय द लिवर ए कामटा किए करता है लिवर ही करता है इट ब्रेक्स डाउन और ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस लाइक ammonia, metabolic waste, drugs, alcohol, chemicals so that they can be excreted. The liver filter is designed to remove toxic matter such as dead cell, microorganism, chemical, drugs, and particular debris from the bloodstream. Bloodstream रे जति कि टॉक्सिक सब्सटेंस रहउची तो ताकू रिमूव करिवार की हेल्प करे लिवर ही हेल्प करे यार करेक्ट आंसर कोन हबो लिवर ही हबो हला तो से प्रोसेस टा कोन कह जाय डिटॉक्सिफिकेशन बोली कह जाय क्लियर
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. If xylem and phloem are arranged in the same radius, such a vascular bundle is called as. Xylem phloem को जदि गोटे समान रेडियस रे गोटे vascular bundle तैयारी करा जिवो ताको कोन कहै जिवो? Collateral, bicollateral, concentric, radial. करेक्ट आंसर कोन हबो? करेक्ट आंसर कोन हबो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी. If xylem and phloem are arranged in the same radius, such a vascular bundle is called as. यार करेक्ट आंसर कोलेट्रल हबो. In the collateral type of vascular bundle, एटा गोटे vascular bundle गोटे type. Xylem और phloem को arrange side by side on the same radius, समान radius रे arrange करिवो. This may be either open or closed. सेरा open ही पारे नले close ही पारे. Usually xylem is seen towards the inner side. Xylem कोई साइड को देखा जीवो? इनर साइड को देखा जीवो. phloem कोई साइड को देखा जीवो? तार ऑपोजिट साइड रे आउटर साइड रे देखा जीवो. The collateral vascular bundle is also known as conjoined बोली कहा जाय. ताको कोलेट्रल vascular bundle भी कहि परिबो, नल नै कोन कहि परिबो? conjoined बोली कहि परिबो. हला एटे काहा को अरेंज करि रखा जीवो? xylem और phloem को सेम रेडियस रे. xylem रहिबो तमरा इनर साइड रे, phloem रहिबो आउटर साइड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. By which process a tadpole develops into an adult frog? को प्रोसेस रे जो छोटा छोटा बेंग जातिर जो बेंग पहना बोली कहा जाय टडपोल डेवलप करे एडल्ट फ्रॉग रे. को प्रोसेस रे? बडिंग, एम्बेडिंग, फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए यार करेक्ट आंसर कोन हबो? By which process a tadpole develops into an adult frog? करेक्ट आंसर कोन हबो? मेटामॉर्फोसिस. Metamorphosis is a process by which animals undergo extreme, rapid physical changes sometime after birth, commonly known example of metamorphosis including the process undergone by most insects, the transformation of tadpoles into frogs, hormones called molting and juvenile hormone, which are not species specific, apparently regulate the changes. देखो ये कौन कहला? एटा जो प्रोसेस रे जो बेंग पणा गुडी को एडल्ट फ्रॉग रे कन्वर्ट हेबे से प्रोसेस रो ना होची कोन? मेटामॉर्फोसिस. एथिरे कोन हबो? रैपिडली फिजिकल चेंजेस देखिबा को मिलिबो आफ्टर बर्थ. जतबे जन्म हबा समय रे समाने टडपुल हिसाब रे थिबे, बट धीरे धीरे जो फिजिकल चेंजेस हबो को प्रोसेस रे? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस रे. तो सेतबेले सी जाय कि एडल्ट फ्रॉग रे कन्वर्ट हे परिबे. ये केवल किसिटा हार्मोन्स पई संभव होइता है. एई हार्मोन जोटा कि गोटे मोल्टिंग हार्मोन आउट होची जुवेनाइल हार्मोन. इधर हार्मोन टिके मन रखियो बुझियला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन के इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन के का से रिलेटेड? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड सिंथेसाइज, स्किन इंटीग्रिटी, फर्टिलिटी. तार करेक्ट आंसर कोन हम? विटामिन के इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यार करेक्ट आंसर ब्लड क्लॉटिंग हबो. कोन हबो? ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के इज ए नेसेसरी participant in synthesis of several proteins that mediate both coagulation and anticoagulation. It is noteworthy for the synthesis of prothrombin, coagulation factor. এটা মনে রাখিবা coagulation factor ওটা কোটা? prothrombin that forms thrombin. prothrombin টা thrombin লে কনভার্ট হবে in the clotting process. ও process রে? clotting process রে vitamin K is integrally involved in the clotting mechanism of blood. ହେଲା ভিটামিন খালি এটি মনে রাখিবা ভিটামিন কে টা তোমার ব্লড ক্লটিং পাই দরকার. আর মনে রাখিবা প্রথম বিনটা কোউথরে কনভার্ট হবো? থ্রম্বিন রে কনভার্ট হবো. ହେଲା এতি ভিটামিন উপর ଗୋଟେ সেপারেট ক্লাস আনিবা. তো নোবেল গ্যাস ইউজড ফর দ ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার ইজ দিস. কোউ নোবেল গ্যাস ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট রে ব্যবহার করা যায়? কোউ নোবেল গ্যাস
कैंसर ट्रीटमेंट रे व्यवहार करता है हीलियम रेडन आर्गन क्रिप्टन यार करेक्ट आंसर रेडन ही हबो हला रेडन was once commonly used to treat cancer the radiation it gives off kills cancer cell कैंसर एथिरे जो रेडिएशन आता है ये कैंसर सेल को किल करता है however the element must be used with great care because radiation can kill healthy cells as well. In fact, the bad side effect of radiation therapy are caused by the killing of healthy cells by the radiation. ये भी बेले बेले कौन करे जदि थेरापी हमें नबा यार जो रेडिएशन टा हेल्दी सेल्स मानक भी मार दे पारे टुडे रेडन इज नॉट एज वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेट कैंसर ट्रीटमेंट रे एको व्यवहार करा जाऊ ना ये हेल्दी सेल को भी मार दबो कैंसर सेल को भी मार दबो बुझियला ये थिला आजर क्लास हमें तो डिस्कशन कले क्लास भल लागिले कि नहीं जो माने थ्योरी क्लास पढ़िया पई चाहुच एडमिशन करि परिबो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 599 रे स्क्रीन ऊपर नंबर नोट कर जो माने एडमिशन करिया पई चाहुच यदि क्लास भल लागिता निश्चित भाव ऑफलाइन कमेंट्स गुण दबा 7841905480 ए नंबर रे व्हाट्सएप करिवो तो जो माने एसएसडी पई एडमिशन करिया पई चाहुच बा आगामी एसएसबी टीजीटी बा एलटीआर मेंस में प्रिपरेशन करिया पई चाहुच हला तो नंबर व्हाट्सएप करिवो बा वन डे एग्जाम ओएसटीटी वन ओटीटी जहा भी हो 1 ईयर वैलिडिटी रहइबा एवं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन रहइबो ओनली 599 रे मैथ क्लास हमें आसंता काली मैथ क्लास करिवो ठीक अछि थैंक यू क्लास भल लागि तो ऑफलाइन शेयर कर दो लाइक कर दो ठीक अछि क्लास भल लागि